Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss on multi-time frame analysis for Nifty and Bank Nifty. But before starting, we have been noticing that there are quite number of views on our videos, but when it comes to likes, the number of likes are very low. So if you guys are liking our video and if you are finding it useful, so please do hit the like button. See, आपसे इस अगर आप लाइक बटन को क्लिक करते हो तो आपसे इसका कोई भी पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा, बट हमें ये बहुत ही मोटिवेट करता है इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स जो मार्केट्स में लाइव बेसिस पे होती रहती है, एवरीडे बेसिस पे हम वो शेयर करते हैं आपके साथ. तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज निफ्टी. तो निफ्टी में चलते हैं एंड देखते हैं. आई एम स्टार्टिंग विद द मंथली टाइम फ्रेम. तो ऑन एन मंथली टाइम फ्रेम व्हाट वी कैन क्लियरली सी इट्स अ हायर हाई हायर लो. यहाँ पर दिस वॉज द मंथ, जनवरी मंथ, वेयर वी सॉ बोथ साइड्स मूव एंड मार्केट बेसिकली क्लोज्ड इन बिटवीन. But February we saw a close above the January month as well as the December month, and this is the March month. So far we have completed 15 days, so another half a month is left for this particular month. So on the monthly time frame you can clearly see there are no issues. So for investors, they really don't have to worry about their SIPs or their long term portfolio because there are no signs of correction whatsoever. On the weekly time frame, what we can clearly see, there have been a sharp up move of back to back green candles for the past 4 weeks. And this particular week actually broke that particular trend of higher high, higher lows. So what we are able to see, this 19th Feb low, you just go and check it here. This 19th Feb low is around 21,875. Then this particular low of 26th Feb week, the low was 21,860, and here we are at 900 so far. That's the reason, if you have been watching my tweets all this while, I have been saying 21,800 and 850 levels are major supports, because market is coming after this particular level. Market is coming to this level for the first ever time, so it is going to take support. This is one of the very important level in the weekly. Also, there's one more concept, same on the support resistance. This was the resistance area. I'll just mark this in red. Yeah. And then can you see this? The moment we got a breakout, clear breakout above it, then we basically, this was the breakout candle, and post that we can clearly see this is the basically a retest of the support. So that's the reason this level is very important. So on the weekly time frame, we can clearly see this is at major supports. So on the daily time frame, this was the trend line. This was this particular channel that you were seeing it on the weekly, but on the daily it is sitting perfectly. Now what we can see, first of all, this particular channel is very steep. Second thing, this particular channel, the breakdown is not very clear. See, this particular, the breakdown candle, majority of the candle is inside, and the breakdown candle is very small, plus it has got a wick. The second one, there was this green candle and today's candle. So we still do not have much clarity. There is one pattern formation in this particular thing, that's basically an inside bar. So in inside bar, basically we have to mark the highs and the low of the child bar. The moment the high or the low gets taken out, we basically take the trade on that side. However, there is an exception in this particular case, because there is one clear support here. So unless this level gets taken out, I won't be going aggressively shorts. So the moment 21,800 is taken out on the index, then we can go aggressively short. Let's go and check what has happened after a big red candle followed by a green candle. So in this case, what has happened, it's basically an inside bar, but it remained on the upper 1/3 area. Okay, and here this is still indecisive. So let's go and check more such examples. Again here, after a red and a green candle, there was this inside bar, but again on the upper zone of this green candle. There is one exception or very different thing that I have noticed. Can you see this particular candle? Inside bar and an inside bar, and it broke down, but it made a hammer and then it reversed. If there are supports, please do take cognizance of this kind of a move. If at all we have to reverse after breaking the lows of today, yesterday and day before, and 21,800 is a very very good support, then we might end up doing something of this sort of a chart pattern formation. On the 15-minute time frame, it's very evident that this was the low of Wednesday. Wednesday low was 21,905. The good part is this week actually closed about 22,000. If you see, look at the weekly closing,
it is about 22,000, which is really good. On the 15-minute time frame, what we are able to see, this low was not violated yesterday, neither today. So here what we can clearly see that there is a resistance here at 22,200. And even if, let's say, this particular level gets taken out, this one is a very strong resistance of 22,270 to 22,300. Also, what we have to look for, as I said, this 21,800 looks to be a very good support. So if at all there is some sort of a bullish reversal pattern at this level, I'll definitely try to go long at this point. Only post confirmation of a bullish reversal. Now, another thing is, if the market has to move up, it will basically, this particular W formation has to be taken out, and that will happen around only and about 22,200. But we need a very good candle. It should not happen that there is a wick here at 22,300 and this is the candle formation. Then we will have to ignore that kind of a formation. Also, what I'm assuming, for the next 2 or 3 days, it might also so happen that market will consolidate in this smaller range and then will finally give us the momentum on either side. This was the thing for Nifty. But when it comes to how to trade on a Monday, let's discuss that. Typically, there are 3 options that might happen. The first one is a gap up, the second one is a down, and the third one is flat. So let's imagine if we open flat, which would be around 22,000, then again, this level will act as a resistance, and this level has been tested quite many times. It might so happen that this level will get taken out and it will test 21,800 only to bounce back again, if at all this happens on a flat opening. See, in case of a flat or a gap down opening, our bias would be that the market might go down a bit. Now, only in case of a gap up, what we might expect, that market will slowly and steadily try to break above 22,100, provided it just sustains here. And if it is a very mega gap up, then first it will try to test this level of 22,020 or 22,040, and then it will take a reversal. But on a shorter time frame, which is on a 15-minute time frame, things are not looking very bullish. So first of all, obviously shorters will try to enter again. But you have to also remember one thing, the risk reward for the shorters at this juncture is not very attractive. It will make more sense once this level gets taken out totally. So remember, in the case of a flat opening or in case of a gap down opening, we might expect market to break this low and make a fresh low, but immediately it might reverse from this level. So keep an eye on this level if you want to trade a reversal pattern. That's about it for Nifty. Let's go and check the Bank Nifty. On the monthly time frame, it is still struggling. If you see, on the monthly time frame, it is only an inside bar, which means wherever this particular move is going to happen, it is going to see a huge move because it has been consolidating for quite some time. And looking at the overall structure on the monthly time frame, Bank Nifty looks like is ready to move on the upside in a span of few days, in a span of few weeks. So let's go and check on the weekly time frame as well. So what we can clearly see, it's again moving into this particular channel, the rising channel. But now here, very important to check this out. This level of 46,600 was acting as a stiff resistance for Bank Nifty for quite some time. Only on the week of 19th Feb, it gave a breakout and sustained above that. Now, this is the first time it is coming as a retest. So I'm still thinking this as a pullback. It's, for me, the structure will get negated only if it breaks and close below 46,500 or 46,300 for that matter, the low of this particular week's candle. So now let's go and quickly check on the daily time frame. This particular breakout of this particular symmetrical triangle, the targets are still open. However, if you actually check on the daily time frame, what we can clearly see, this was a major bullish candle on the daily time frame. So until and unless the low of this particular candle is tested, we will still consider it as a higher low. Why? Because if you can see, the buyer shifted from this zone, and every time it shifted, it made a higher lows. There is a continuously sell off in case of Bank Nifty, and in fact in the last 2 sessions, it was not a very clean selling move, in the sense it went down, came up and closed almost where it opened. Same thing happened today, formed doji patterns on both the days, which means not a clean single side move on Bank Nifty. Coming to the 15-minute time frame, what we can clearly see is the supports are very nearby, which is 46,230 to 46,300, and the immediate resistance is 46,900
at least once market is going to test this level. If at all market takes this level out and consolidates here a bit and then gives a breakout, then it will be a trend line breakout as well. Market moving up and consolidating in this range, which is around 46,800 to 46,900, will be very crucial for Bank Nifty to take out this particular level. Now we will just see how this particular trend line has been forming a resistance. So it has already formed resistance once here, once here, once here. So thrice it's already been tested. So the moment market moves up and consolidates here a bit and then gives a breakout, then we can clearly see these levels coming. So the moment 47,200 gets taken out, then we can clearly see a sharp up move on the Bank Nifty. But this is only if we see an up move. Now where can we sell? For fresh selling, we have to break this level. Once this level gets taken out, then we can see levels of 46,000 to 45,700. But then this level of 230 level needs to be taken out very clearly and very strongly. As I said, both the days what happened, see in this case, yesterday market went up and then closed somewhere where the market opened. Today market went down and then tried to close exactly almost where it opened. So this kind of a zigzag move, see where here what it did, it first moved up first and then came down. Today it first went down and then came up. So this is very volatile. It's not a very clear single side move. Again, it's exactly like this kind of a move, both sides moving. So for a clean trend, we need, so in this kind of trend, it also shows that market is also trying to refuse to go very clean in a very clean way. That's the reason we have to wait out and wait for our setup to get activated. Now let's discuss what to do on a Monday. Now let's say we open flat in Bank Nifty. The moment we open flat, we'll basically see whether the sellers will try to pull this particular level down. If it breaks this level, just be cognizant of what it happens around this particular level at 230 levels, 46 230, whether it breaks or it U-turns. Like today, what happened, it actually broke the previous day low, but there was no follow through or momentum. It remained sideways. It was dead, totally dead for good part of time, and then gave a spike and then again came and then it remained volatile. For that, you have to ensure that it breaks this particular level totally for a clean down move. Let's imagine if it opens with a gap down. Check whether it is trying to go even below this particular level, and if it goes to this level and then bounces back, you'll get some lower level. So mark that level, and the moment prices try to cross that level again, just initiate a short. Now let's say we open with a gap up of around 46,800 or something, and let's say if it prices try to come here and then immediately tries to reverse and then consolidates here. The moment we see such kind of an action, then we know most likely market is trying to go up. Then we have to basically wait for this consolidation to break out or break down. Usually if it breaks down, then again it will come up till this level, and then you can't short. Like if it traversed to all this level and then it gives a breakdown, then you can't short. Okay, so if it is a very small rectangle, then you can quickly play for some 100-200 points. That's it on the downside the moment it breaks here. But if it breaks on this side, then you can play for a good points with a smaller SL. Now for our Hindi audience, I'll just quickly wrap this up. तो हमें मंथली में क्या दिख रहा है? मंथली में तो बिल्कुल भी हायर हाई हायर लो है, कोई चिंता की बात नहीं. अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप SIP इन्वेस्टर हो, अगर आपके पास पोर्टफोलियो पड़ा है, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है. अब चलिए देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे. वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, अगर आप देखोगे पहले ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, पहले ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये अब सपोर्ट में बदल चुका है और मार्केट बिल्कुल उसके ऊपर ही रहा है. अगर आप देख रहे हो ये फरवरी के जो 2 लोस है उसके ऊपर ही हम टिके. इसके लिए मैं कह रही हूँ, हम मेरे सारे पोस्ट में कि जब तक 21,800 नहीं टूटता है, हम बहुत अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं जाएंगे. और 21,800 से 850 की जो जोन है वो बहुत ही अच्छी बाइंग लेवल है. अब यहाँ पर चिंता की ऐसे तो कोई बात नहीं है, बट हाँ यहाँ पर इधर आफ्टर चार हफ्तों के अपमूव के बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है. बट हमें ये जब तक इसकी लो ब्रेक होके क्लोजिंग नहीं मिलती है, जैसे कि देखिए वैसे तो ब्रेक तो इसने भी की थी बट इसकी क्लोजिंग नहीं मिली थी उसके नीचे, तब तक वो नहीं होता, तब तक हम ऐसे बहुत चिंता में नहीं आने वाले हैं. अब डेली में क्या दिख रहा है हमें, ये सीरीज ऑफ इनसाइड बार फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, ये सीरीज ऑफ इनसाइड बार फॉर्मेशन कर रहा है. तो अब क्या होगा,
एक तो पहले तो ये इनसाइड बार में क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर इनसाइड बार की जो चाइल्ड बार है उसकी हाई या लो टूटे तो हम उसी डायरेक्शन में प्ले करेंगे। बट इसमें एक ट्विस्ट है। अभी अगर मान लीजिएगा अगर ये हाई ब्रेक करता तब तो हम डेफिनेटली ऊपर के लेवल के लिए प्ले करेंगे। बट मान लीजिए कि इनसाइड बार का लो ब्रेक करता है तो तब मैं फिर वेट करूंगी 21,800 पे क्या रिएक्शन देता है, बिकॉज 21,800 पे अगर रिवर्सल का रिएक्शन देगा तो आई विल गो लॉन्ग। और 21,800 के बाद रुक के अगर ब्रेक करता है फिर ही हम शॉर्ट करेंगे। बट उससे पहले बिल्कुल भी इतने छोटे पॉइंट्स के लिए मैं नहीं उस पर ट्रेड कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और सेकेंड चीज क्या है, ये जो चैनल है ये पर्टिकुलर राइजिंग चैनल है, उसका ब्रेकडाउन अब तक हमको क्लियर मिला नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बस एक एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलती हूँ। यूजुअली क्या होता है, ऐसे बड़े रेड कैंडल उसके बाद ग्रीन कैंडल के बाद एक इनसाइड बार ही होता है। बट वो ग्रीन कैंडल के ऊपर के 1/3 पार्ट में हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगी। ये देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ऊपर के एरिया में रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक डिफरेंट एग्जांपल दिखाना चाहूंगी। वो है ये, यहाँ पर देखिएगा, अब 3 दिन का इनसाइड बार कैंडल बना है। पहला रेड, सेकेंड ग्रीन और वापस रेड। ठीक है, और उसके बाद इसने डेफिनेटली ब्रेक किया, बट यहाँ पर कोई मेजर सपोर्ट थी, इसके लिए उसने हैमर बना और फिर ऊपर गया। तो अगर मान लीजिएगा अगर हम लोग ये लेवल ब्रेक करते हैं फॉर सम रीजन 800 के पास ऐसा कोई हैमर फॉर्मेशन अगर होता है तो हम डेफिनेटली लॉन्ग जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर प्राइस एक्शन भी ध्यान में रखना। तो अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि क्या है निफ्टी की हालत। तो 15 मिनट में क्या हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने ये जो परसों की लो है वेनसडे की, वो लो के पास कल उसकी पहले ही उसने मार्केट ने सपोर्ट लिया और घूम गई। आज भी वो नीचे आई बट कल की भी लो से पहले ही वो घूम गई। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो सपोर्ट की ये लक्षण दिखा रहा है। पर मान लीजिएगा फॉर सम रीजन अगर हम मंडे को फ्लैट ओपन करते हैं और मार्केट अगर नीचे आएगी तो क्योंकि अब ये लेवल्स काफी बार टेस्टेड है, वो ब्रेक कर जाएगी। और जैसे ही ब्रेक करेगी आप हम एटलीस्ट ये लेवल तक तो देख सकते हैं 800-850 की जोन तक। और यहाँ पर अगर हमें कोई बुलिश रिवर्सल मिला तब हम उस चीज को लॉन्ग प्ले करेंगे। बट मैं जैसे कि मैंने कहा, हम आग बंद करके जस्ट बिकॉज ये लेवल पे आया करके हम लेने नहीं वाले। वी विल वेट फॉर दैट बुलिश रिवर्सल टू हैपन एट अराउंड 800 से 850 की जोन के यहाँ पर। अगर क्योंकि इतनी बड़ी रेंज है तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट और 1 या 2 दिन इसी रेंज के अंदर बिता दे और फिर मूव दे दे। अब आपको एक ही चीज याद रखनी है, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही कि होने वाली है, हो सकती है। वो कब पता चलेगा हमें, जब मार्केट ये लेवल को अच्छे से ब्रेक करके सस्टेन कर देगा। ठीक है, बट यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को पहले तो इसको ब्रेक करके सस्टेन करना पड़ेगा, इसके साथ साथ तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट लेट्स से यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करती है और थोड़ा सा वेट करती है और फिर ब्रेकआउट देंगे तब हम देखेंगे। ये तो खैर ये तो डेली में हम रोज ही आएंगे तब हम आपको बताएंगे। बट ओवरऑल अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहाँ ना कहाँ, ऑफ कोर्स 15 मिनट में लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन क्लियर कट है। बट ये लेवल पे हम बहुत ज्यादा अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं जाएंगे। हम शॉर्ट कहाँ जाएंगे, जैसे ही 21,800 की लेवल ब्रेक हो जाती है उसके बाद हम फ्रेश शॉर्ट्स के लिए प्लान करेंगे। बट अदरवाइज यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करने जाओगे आपको कोई क्लीन मूव नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर ऊपर गया, आज भी यहाँ पर आया और फिर से ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, आपको कोई क्लीन ट्रेंडिंग मूव नहीं मिल रही है। तो हमें ये पूरा लेवल ब्रेक करने की के लिए वेट करना पड़ेगा या ये पूरा लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम क्लीन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो ये हुई बात निफ्टी की। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर, मंथली में डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी में बड़ा सिंपल है, मंथ ऑन मंथ ये बेसिकली इनसाइड बार ही बना रहा है। ये है मदर बार जो कि दिसंबर की हाई और लो है, सारे कैंडल्स उसी के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो जब भी मार्केट किसी भी तरफ डायरेक्शन देगा तो ये बहुत बड़ा मूव देगा। ठीक है, ये पूरा ये जो रेक्टेंगल चल रहा है इसका पूरा अप मूव दे देगा। अब क्योंकि वीकली में ये पर्टिकुलर जो बैंक निफ्टी है ये पर्टिकुलरली एक राइजिंग चैनल में मूव कर रही है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, वीकली में 4 ग्रीन वीक्स के बाद हमने एक सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखा है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप ये अगर नोटिस करोगे तो ये पर्टिकुलर लेवल हमारे पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी। ये देखिए रेड कैंडल, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया और मार्केट बिल्कुल उसी के आसपास है। तो आप अगर देखोगे तो 46,600 के आसपास है, क्योंकि 46,600 पहले उसके लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो डरने की कोई बात नहीं है अभी तक। ठीक है, अब चलते हैं हम डेली में और डेली में देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो डेली में सिंपल है,
यहाँ पर जैसे कि रोज नीचे जा रही है, बट अगर आप पिछले 2 दिनों को देखोगे तो आपको क्लीन ट्रेंडिंग मूव नहीं मिली है। क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ? नीचे तो जा रही है लेकिन वापस नीचे से बायर्स लेकर ऊपर आ रहे हैं, और जहां पर ओपन हो रहा है वही क्लोज हो रहा है। ये पिछले 2 दिन की यही कहानी है, आपको ट्रेंडिंग मूव नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सबसे रेफरेंस कैंडल के लिए आप पास में ये है। ठीक है, 1 मार्च की जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो बायर है इसका स्टॉप लॉस या तो ये कैंडल के नीचे होगा या तो फिर यहाँ पर होगा, राइट। और ये स्विंग जब तक लो नहीं काटता तब तक हम लोग स्टिल हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ही है डेली में भी। ये कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे बायर्स का जो जोन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट किया हुआ है, तो अभी भी हम हायर लोस में ही है। तो जब तक ये कैंडल की लो जो है, जो कि 218 है, जब तक वो लेवल नहीं कटती है तब तक हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अभी ये 218 से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 300 की लेवल आज गई थी, आज की लो मारी थी, तो 200 इज लाइक 100 पॉइंट्स फॉर बैंक निफ्टी, विच इज नॉट अ बिग डील। तो जब तक वो लेवल लो नहीं तोड़ती है तब तक हम फ्रेश सेलिंग के लिए नहीं प्लान कर सकते। और ऐसा भी होता है क्योंकि इतनी सारी सेलिंग आई है तो एक पुल बैक आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे कि हमने देखा, मैं यही बात कर रही थी कि कल देखिए, कल ये मार्केट पहले तो ऊपर गया, फिर सॉरी पहले तो नीचे गया, पहले तो इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, और आज क्या, फ्लैट ओपनिंग के बाद, सॉरी गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले तो थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बिल्कुल टाइम पास किया रेंज में, और फिर ऊपर की तरफ जाके फिर ऐसा एक वॉलेटिलिटी दी। तो कहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर भी यही वाली मूव है। तो ये वाली जो वॉलेटाइल वाली मूव है यही मिल रही है। तो अगर मतलब आप बेसिकली अगर सुबह आपने बाइंग प्लान किया है तो मिड मॉर्निंग तक आपको सेलिंग प्लान करनी होगी। अगर आपने सुबह सेलिंग प्लान किया है तो मिड मॉर्निंग के बाद आपको बाइंग। तो ये कोई क्लीन ट्रेंड नहीं दे पा रहा है बैंक निफ्टी अभी हमारे लिए। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई क्लीन शॉर्ट करना है तो 200 की लेवल को जब भी ब्रेक करेगा उसके बाद ही हम प्ले करेंगे ये वाले लेवल के लिए, 45,600 या 45,700 के लेवल तक के लिए। पर उसके पहले कोई शॉर्टिंग वाली अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। एक्चुअली अच्छी ट्रेड यहाँ पर, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के भी हिसाब से, जैसे मैंने कहा पुल बैक की स्पेंडिंग, उसके भी हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक्चुअली रिवर्सल ट्रेड के लिए रिस्क रिवॉर्ड बेटर है, विच इज ऑन द पुल बैक साइड। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मान लीजिएगा कि कल मंडे को मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो वेरी हाई चांसेस कि ये ऐसे रेंज बना के ये ब्रेक करे, बट यहाँ पर क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है। 200 के लेवल पे अगर क्या वो सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है तो फिर हमको भी लॉन्ग जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है अगर फ्लैट और गैप डाउन खुली तो। अब लेट्स इमेजिन मार्केट ओपन होती है गैप अप से 46,800 के आसपास। तो ऐसा हो सकता है पहले मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी और समवेयर अराउंड 46,600 के पास सपोर्ट लेकर, या 46,550 के आसपास थोड़ी सी सपोर्ट लेकर यू टर्न जाएगी और मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन रेंज में चली जाएगी। अगर ये होता है तो दिस इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर द मार्केट। जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है विच इज अलोंग विथ ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जैसे ही होती है फिर हम अच्छे से लॉन्ग जाएंगे और हमारे लिए स्टॉप लॉस भी काफी पास की होगी, राइट, ये कंसोलिडेशन की लो। ऐसे केस में हम लोगों के लिए एक अच्छी ट्रेड बनेगी। बट नीचे की तरफ क्योंकि क्या हो रहा है ना, नीचे की तरफ एटलीस्ट पिछले 2 दिन में तो ये बहुत ही वॉलेटाइल दे रही है, तो हम इसको अच्छे से ट्रेंड में कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम वेट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड लाइन है ये ऑलरेडी टेस्टेड है, 1 2 3 टाइम्स इट्स ऑलरेडी बीन टेस्टेड। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है और थोड़ा सा वेट करती है और फिर ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करती है अलॉन्ग विद दिस कंसोलिडेशन, वो लगभग वो लेवल जो है वो 46,900 से 47,000 के ऊपर आती है। जैसे ही मार्केट उसके ऊपर आएगी बैंक निफ्टी, फिर हम उसमें लॉन्ग स्केल प्ले कर सकेंगे। तो ये है हमारे एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द अपकमिंग वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज हिट द लाइक बटन। आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू गाइस, प्लीज हिट द लाइक बटन। प्लीज बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हमारी जो अगली वीडियो है जो कि कल और परसों आने वाली है वो टोटली एजुकेशनल वीडियो होने वाली है, तो प्लीज डोंट मिस दैट आउट। ठीक है, सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर।